तो कैसे जमेगा हमें, right? Fine. Before coming to inequality, right? Let us understand what is equality first, right? Let's suppose if I'm telling x equal to 5, right? So if I ask you what is the value of x, you're gonna tell sir x value is 5, so this value is fixed, right? Why? Because there is a sign equal to that says that x value will be 5, right? But if I'm considering in this manner, ki x is greater than 5, right? So now if I ask you what is the value of x, so let's suppose one will tell 6, one will tell 7, one will tell 8, right? Anyone can tell 23, 24, whatever number is thinking in coming in your mind, right? So in this two situation, what was the difference? In this, the value was fixed, but in this, the value is changing. What changing? Because the value of x is not fixed. X is a number that is greater than 5, and greater than 5 can be any number, right? It can be 6, it can be 7, up to infinity, right? So if I'm writing on a number line, right, I'm telling greater than 5. So which side of a number line will come? Right hand side, right? Yep, this one side, Yes, sir. right? So if I have to denote it now, तो एक तो ये denotion हो गया, right? कि x is greater than 5. If I have to write it in a form of कि from where to where x belong, so how will I write? I'll write like this, because I don't know what is the last number, right? For that reason, I'm just writing infinity. That will be 5 to infinity, right? This is about inequality. देखो इसका opposite भी हो सकता था. It might be this also. X is less than 5. In that case, what you have done? ये वाली चीजें, ये वाला part आप लोग ले लेते, right? Would have considered this part, है ना? ठीक है? So this is हाँ what भैया is inequality, right? Either greater or less or equal, right? अब एक मेन डिफरेंशिएशन है दैट आई हैड टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो सुनना, उसमें ब्रैकेट का बहुत रोल रहता है. जस्ट आई अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रैकेट. वो चीज अभी आप समझते हैं, फिर उसके आगे विल मूव टू क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट? देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रैकेट्स. वन इज दिस एंड वन इज दिस, राइट? First, let us understand the definition, फिर we'll understand where it is being used, right? If any number a to b is written, right? Let's suppose I am telling x belongs to a to b, right? And this bracket is there, curve bracket is there, right? So curve means, the curve definition is this, ki the number which is next to this one, let's suppose it is a, right? So x would not include a, right? That will include the numbers between a and b. What I mean to say that if it is 3 and 5, right? So it would be 4, 3 to 4, 4 to 5, any number between these two, 3.1, 3.2, 3.3, but it would not be 3 if the bracket is this one, spherical bracket. If you have a spherical bracket, the definition is clear. The number which is written next to the spherical bracket, that number will be not included. Yes, the other side also it won't be included, but the number that is between them, that would be included, right? If I'm asking 3 to 6 and I'm telling tell the value of y, all the integers value of y, right? So what would you say? You will say 4 and 5. 3 and 6 won't be the answer. Why? Because the bracket is of spherical sign, right? This is the definition of spherical bracket. Let's come to the square head bracket, right? Simple, just इसका उल्टा. It means that x will include a to b, all, even a and b, including a and b. इसमें including a and b, all the numbers between a and b, excluding a and b. इसमें all the numbers between a and b, but including a and b, right? Question से समझते हैं. Let us understand through question. I'm writing x is greater than 5 and I'm writing x is greater than equal to 5. What is the difference between these two? This is greater than 5. So if you want to put on a number, ये पूरा side आएगा but 5 नहीं आएगा, because x is not equal to 5, right? So if I had to write this out in the form of bracket, how am I gonna write that? 5 is not included, so 5 की just पहले or 5 की just before, what type of bracket will come? Spherical. That would be 5. Then
up to extent, right? That is infinity, right? See, infinity, we don't know what exactly is infinity, right? So this is the rule. Whenever you are writing infinity, automatically, by mandatory, by automatically the bracket will be this. The default bracket यही होगा, ठीक है? So if I write to like for this, I'll write x will belongs to 5 to infinity. Now again, I'm using this bracket, ठीक है? Similarly, if I'm going for this case, what is the difference between this and this? Only this equal to sign, right? In this, it was x belong from 5 to infinity. In this, it would be what? X belong from 5 including to infinity, right? Now, in this case, 5 is x equal to 5 is possible. But in this case, x equal to 5 is not possible, right? This is about the bracket. There are two type of bracket. एक होता है spherical and the one is square head. If it's a spherical, the number which is written next to it, it won't be included if this bracket is given to you. And if this bracket is given to you, right? This one. It means that A and B both will be included. Clear? Now clear है ना सबको? हाँ भैया. Okay, before starting with the question, let me tell you some more things about inequality that is important. The first one is, if anything you are writing in denominator, there is a numerator, there is something called denominator, right? See, one thing understand always, right? कि denominator cannot be zero. This is most important thing to note, that denominator cannot be zero. Not a single time it can be zero. Why? See, अब वो मैं पढ़ाने जाऊंगा नहीं, because जो जिन्होंने पढ़ा है, right, continuity and differentiability, right, limit पढ़ा है जिन्होंने, right, वो उन्हें पता है, they know very very well, right, कि 1/0 is what? Infinity, right, and this is not defined. मतलब whenever denominator में zero आता है, it is not defined, right? So that is what is it. So for that reason, denominator cannot be zero. And please don't ask me why it is not defined, because this is what is, फिर हमें 12th class की limit पढ़नी पड़ेगी, right? तो कोई फायदा नहीं है उसका. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि whenever an inequality question is in front of you, right, you have to assume first thing that denominator cannot be zero. That's all. बाकी सब तो सेम चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन सो इट विल बी मोर क्लियर, राइट? ओके, जस्ट अ सेक. लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? x plus 3 greater than 0, right? Before solving it out, before solving an inequality question, right, just note down 2 points in your mind. First one, you have to find the zeros. Zeros or root of the equation that is given. Second, put it on number line. And third, start with positive sign. What I mean by positive sign, let's suppose we had 1 0 as 3, right? Fine. So you have to start plus minus. What I mean to say that, for example, let's suppose this one is given, right? X plus 3, no, x plus 3 नहीं, x minus 3 का ग्राफ बना दिया मैंने. Anyways, I'll do that, right? X minus 3 is less greater than 0, so x is greater than 3, right? So what I mean to say that, what it mean to say that कि 3 से पहले आप कोई भी नंबर ले लो, 3 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, take any number that is greater than 3, right? For that thing, what will be this value? Greater than 0, that means positive. Try करके देख लो आप लोग. 5, 6, 7, any number you can put, not in infinity. Again I'm saying any number, so that would you will get a positive number, right? So इसमें अगर मैं positive sign लिख रहा हूँ, तो what I mean to say that कि any number if you are putting greater than 3, right, for that this thing is positive, right? For that thing is, it is positive, right? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन. पहला था x plus 3 greater than 0, right? Okay, fine, right? Okay, so what I told you guys to do, first of all, what do you do? Find the zeros. What would be 0 in this? X equal to -3, right? नंबर लाइन पे डाल दो. व्हाट विल गेट? क्या मिलेगा?
क्या पूछा उसने? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोला, तो आंसर विल बी व्हाट? -3 टू इन्फिनिटी। अगर लेस देन 0 बोलता तो व्हाट वुड बी द आंसर? -∞ टू -3, -3. बोथ स्फेरिकल। Yes. Yes. हाँ. दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज मैं लेवल अब इसके बाद हाँ बढ़ाऊंगा, भैया, लेवल आफ्टर दिस। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, हाँ भैया। Yes. राइट? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, इरेजर कहाँ गया इसका? यस, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, पहला स्टेप व्हाट डिड वी फॉर यू, इसको कैसे ट्रीट करो आप? इक्वल टू लेके, ठीक है, कि आप एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट ट्रीट इट लाइक दिस। तो व्हाट यू वुड हैव डन, आप इसको यहाँ शिफ्ट करते दिस थिंग, तो ये क्या हो जाता? 4x -3x -6 -2 ग्रेटर देन 0। Yes, sir. क्या आता? -3x, सॉरी, x -8 ग्रेटर देन 0, हाँ. राइट? 0 क्या है इसका? ऐसे भी दिख रहा है वैसे तो आपको, x इज ग्रेटर देन 8, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू अप, राइट? व्हाट इज 0? 8, 8. पॉजिटिव नेगेटिव, right? What do you Positive. have to include? Greater than Positive sign. 8. Answer will be what? ये वाला 8 to ब्रैकेट होगा, याद रखना। infinity. 8 to infinity. Infinity. This thing is clear to everyone, Yes, sir. right? Yes, one more thing. कुछ प्रॉपर्टीज है, right? You should know that out very clearly. सिर्फ नेगेटिव में a is greater than b, let's suppose, right? If you are multiplying again, whatever I am saying, just listen it carefully. If you are multiplying with positive number, right? Let's suppose we have 3 is greater than, sorry, 4 is greater than 5, sorry यार क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, 4 is greater than 3, right? You multiply with positive number, constant both side. Let's suppose we are multiplying 5, what we are getting? 20 greater than 15, 15. पॉजिटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, ठीक है? फिर आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में फिर आप छोटा ले लो, ये कर लो, वो नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल में चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। आई एम जस्ट सेइंग, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विद पॉजिटिव नंबर, एनीथिंग इज चेंज इन साइन। 4 No. is greater than 3, 20 is greater than 15, right? Again, same thing is followed up. So even if I'm multiplying with positive number, nothing gonna change. A will be greater than B only, right? अब इसका उल्टा सोचते हैं, A is greater than B. Let's multiply negative number. Multiply करो, -1 से करो तो छोड़ो. What will you get? This is right. No. So what you understood? कि whenever, remember this thing, this is very important. Whenever you are multiplying negative number on both sides, the sign will change, Change. right? If I multiply minus with this one, right? So what will happen? A will Is less be than. less than. Let's suppose we have x plus 3 greater than 0, right? और आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइटिंग x minus 3, minus x minus 3, what will happen? The sign will change, right? ठीक है, हेलो, क्लियर? Yes, sir. हाँ. अरे भाई आप बोलोगे सर नेगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या ही चेंज होगा, आप खुद सोच लो ना। 5 इज ग्रेटर देन 0, राइट? माइनस से मल्टीप्लाई करना तो व्हाट विल गेट? -5 इज ग्रेटर देन 0 होता है क्या? इज इट पॉसिबल? No. No. So what would happen? The sign will change, right? Whenever you are multiplying negative both side, what's gonna happen? The sign of the inequality would change. This is clear to everyone. Everyone understood why it is changing? Yes, sir. भैया, Let's talk about one more thing, right? If A is greater than B, right, and they are telling you to do the reciprocal,
or it is coming in denominator. For example, let's suppose 3 is greater than 2. इसमें क्या होता है? If you do the reciprocal, again sign is changing. देखो इसका ज्यादा यूज नहीं होता, नेगेटिव वाले का is more, or that is used more, but हाँ, just to make you understand, right? ठीक है, clear है? This thing is clear to everyone, right? ठीक है. Okay, one more thing I just want to tell you guys, concept only in this thing, right? There is numerator. Let's suppose there is denominator, right? Let's suppose okay, we have 1 by x, और हाँ यार 1 by x is greater than 0, right? अच्छा ये बताओ, जब इनइक्वालिटी होता है, राइट, व्हेनेवर वी हैव अ इनइक्वालिटी, राइट, और इक्वालिटी हो जाता है, आप क्या करते हो यूजुअली? जैसे 3x है बाई 4 है यहाँ पे, और आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो. Whenever हाँ something is a denominator, what you do cross multiply, right? Just tell me one हाँ thing. When they have just written x, and x can be any number, right? Cross multiplication would be possible in this case. Why? Because we don't know whether it is positive or negative, right? Hello, we don't have idea about that, na? अरे भाई, जब x के बारे में don't have any idea, how you can cross multiply? हाँ, if it is like this way, wait, let me tell you. Then you can do cross multiply. Why? Because it is always positive. If I'm writing 1 by a square, a, no matter whatever a you take, right, what will happen? This will be always positive. So in this Yes, sir. particular case, can I do cross multiply? हाँ Yeah. 1 by This x is clear to हाँ everyone? अरे मेरे भाई, this is clear to everyone? हाँ Then भैया I'll move ahead. हाँ भैया. जी भैया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, यस, ये ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं करते, ये वाला करते. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट्स डू दिस. x minus 3 and x minus 2, right? That is less than equal to 3, right? ठीक है, they have just told solve for x. They have not mentioned whether x is positive, whether x is negative, nothing like that, right? So would it be possible to cross multiply? First tell me, first step one. The नहीं answer भैया would be no, right? तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? कोई नहीं यार, इक्वल टू कैसे सॉल्व करते थे इसको? क्या करोगे? इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा बताओ? x minus 3, x minus 2 minus 3 less than equal to 0. हेलो, हाँ. है ना? एलसीएम ले लो. What you will get? X minus 3 minus 3x plus 6. राइट, Okay. ये क्या हो जाएगा अब? Minus 2. राइट, हेलो, हाँ. हेलो, दिस इज क्लियर? जी सर. यहाँ तक हाँ. सबको क्लियर है, राइट? फाइन. एक चीज नोटिस करना, तो नेगेटिव दिख रहा है. हाँ. व्हाट यू गाइस विल डू? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ऊपर वाले को, या दोनों साइड. तो व्हाट यू विल गेट? 2x minus 3 by x minus 2. साइन क्या होगा? Greater than equal to. Greater than equal to 0. साइन क्या होगा बताओ? Greater Greater than than equal. equal greater to than 0, equal right? हाँ. What are the zeros? 3 3 by by 2 2. greater 3 than by 3 by 2 2 and and 2. 2. 3 by 2 and 2. हाँ. पहले क्या हाँ. आएगा? 2. Right. 3 by 2 and 2. One thing you should, क्या है यहाँ पे? Equal Greater to. than. Equal to. For हाँ. that equal to, denominator cannot be 0. तो 2 तो possible है ही नहीं, हाँ. right? So let's put the sign. How will you start? Plus minus plus. हाँ.
right? So if I'm gonna put x, क्या होगा x? 3 by Sorry, ये 2 वाला bracket. including Minus minus infinity to in 3 3 by by 2, 2. right? Yes. Then you don't have to include this. When you don't have to Yes. include this, what sign you will use? मतलब ये भी Un- and ये भी union. union. Union 2 to infinity, 2 excluding to 2. 2 to infinity, this one. infinity. But I have done one thing wrong. This 3 will by be 2 close bracket. 3 by Yes. 2 close. Okay. clear. Hello. Got it, sir. Jesus, yeah. This is clear to everyone. जिसको नहीं हुआ, you can ask. I don't have an issue in explaining again. 2 क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा बिकॉज क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसलिए। कौन सा क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा? 2 वाला? हाँ। भाई डिनोमिनेटर मैंने अभी तो समझाया था, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 ना, 2 डाल। अच्छा ठीक। डाल तो सही 2। हाँ 0 बन रहा है ना, अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ, clear. This thing is clear. जी सर. One हाँ, more thing I have to explain. That also I'll explain with example only, right? समझते हैं चीजों को, right? Right. See, sign हर केस में it will change, right? Whenever is there ना, like for example, if I'm writing x plus 4, x plus 5, right? तो जब भी आप 4, 5 you are putting, sign gonna change, right? हाँ, but एक केस में the sign won't be changing. Let me explain in which case. Whenever the power of a number, right? This power I'm talking about, right? This is even. The sign won't change. Why is that? Let us understand. If I'm writing x plus 2 whole square, what I mean by writing this? X plus 2 into x plus, right? है ना? Hello. X plus 2 into x plus 2 ना? 2 is appearing 2 times. So if I'm gonna put out in a number line, tell me one thing. If I'm putting minus 2 here, right? ठीक है, minus 2 पे होगा, ठीक है, minus 2 I'm putting it here, right? ठीक है, मैंने प्लस से स्टार्ट किया, right? तो यहाँ पे नेगेटिव चलो आ भी गया, लेट्स सपोज, बट माइनस 2 तो 2 टाइम्स है ना? माइनस 2 इज 2 टाइम्स ना, राइट? तो प्लस 2 माइनस, फिर माइनस 2, देन फिर प्लस. तो व्हाट वुड हैपन हियर? यू विल गेट व्हाट? प्लस. वो तो ऐसे भी दिख रहा है, राइट? डाल दो कोई भी वैल्यू आप x की जगह, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. पुट. हेलो. जी. भाई मेरे, लाइक दिस इज द स्क्वायर वाला पार्ट है, दिस इज स्क्वायर, राइट? क्या है? होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा कोई भी नंबर पुट, राइट? इस केस में भी यही चीज आ रही है. Why I am not changing the sign? Because minus 2 is appearing 2 times, right? Right. एक बार you consider minus 2, so your sign got changed from plus to minus. But that minus 2 is not just single time, it is twice. So in other time it will become positive. Hello. Yeah, This got thing is it. clear. Right. Fine. What if it is cube? Then it is same as x plus 2. Right. सोच हाँ लो भैया। आप लोग, है ना? Right. हाँ। So in this case, sign will change. It will go from plus to minus. Clear है? This thing is clear to everyone. Hello. जी भैया, हाँ क्लियर. भैया। हाँ भैया. आगे बढ़े. Let's move हाँ ahead. चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखा दो फटाफट. I'll solve it, but you try from your side. दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ. 1 2 easy है, just try it from your side. One is for x minus 7 by x is greater than 3.
and the other one is x square is less than 5x. Try, फिर उसके बाद I'll solve. Don't tell the answer, right? Because let other also understand. 5 मिनट का समय है आपके पास. 5 मिनट नहीं, 3 मिनट मैक्स टू मैक्स. 5 मिनट ज्यादा बोल दिया, आई गेस. हाँ. डोंट टेल द आंसर, पहले बता रहा हूँ. सॉल्व करके अपने पास रखना. हो गया ना? Okay. We can't cross multiply, right? Because we don't know what is x, right? So what do we have to do? Shift it here. तो क्या आएगा आपके पास? 4x minus 7 by x minus 3x greater than 0. क्या आ जाएगा? Yes. x minus 7 by x greater than 0. Right. What are the critical point or what are the zeros here? 7 and 0. 0. Yes. अब ये मत बोलना सर 0 पे तो नॉट डिफाइंड है भाई. 0 वी वोंट इंक्लूड, बट क्रिटिकल पॉइंट तो है ना 0. क्रिटिकल पॉइंट इज 0 ना, राइट? तो नंबर लाइन में व्हाट टू नंबर्स यू गोना पुट? 0 and 7. 0 and 7. ग्रेटर देन बोल रहा है, प्लस माइनस प्लस. Plus. ग्रेटर देन मींस ही इज आस्किंग यू टू टेल द वैल्यू पॉजिटिव 1, Minus. Yes. राइट? तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? दैट वुड बी Minus in. Minus infinity माइनस to 0. इंफिनिटी टू 0. दैट वुड बी दिस ब्रैकेट. Yes. डिनोमिनेटर में भाई मेरे, Open bracket. और वैसे भी ग्रेटर देन है, ठीक है? यस सर. क्या Equal. यूनियन Union. 7 7 to to infinity. 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 In both the case, the bracket would be Open. close. Open. क्लोज ब्रैकेट कहते हैं. नहीं, ओपन ओपन ओपन. हाँ, ओपन ब्रैकेट. सॉरी, Open माय bracket. फॉल्ट. Yes. राइट. हाँ अंग्रेज, सॉरी भाई, गलती हो गई. कान पकड़ लूं फिर. सॉरी 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 भाई, सॉरी. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस वन. व्हाट यू डू? हो गया. शिफ्ट यहाँ ले जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 5x Minus 5 लेस देन less than 0. 0. अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक आता है ना सॉल्व करना. एक्स कॉमन निकाल लो. Exact minus 5. तो वैल्यूज क्या होंगी? 0. 0 and 5. 0 and 5. Oh, But in this case, we need negative, negative, negative. That would be x will belong 0 from to 5. both Open bracket 0 open. to 5. Both the questions are clear to everyone. Yes, sir. Ramanjeet, clear? हाँ जी सर. Okay. Vikas, clear bro? Subir, हाँ भैया. clear है? हाँ भैया. भैया एक चीज पूछना था कि ये जो 0 और 5 तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, मतलब 0 to 5 के बीच रहेगा कि मतलब. भाई क्यों होगा स्क्वायर ब्रैकेट? x कॉमन निकाल लिया ना हमने भाई. वो थोड़ी ना x हाँ. माइनस 5 का होल स्क्वायर थोड़ी ना मेरे भाई. सिर्फ x स्क्वायर है ना मेरे भाई, राइट? हम्म. दिस इज डिफरेंस ना भाई, ये तो पता है ना तुझे. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम a स्क्वायर प्लस 2ab.
ये a स्क्वायर इज डिफरेंट, राइट? ये पॉजिटिव होता है पूरा, बट दिस वी कांट टेल ना वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ राइट? तो मैंने यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर है, राइट, उसके साथ -5x है, देयर आर टू टर्म्स ना मेरे भाई। अगर ये ऐसा होता है x हम्म -5x का होल स्क्वायर, देन आई वुड हैव सेड हाँ फाइन, ठीक है कर लो, जैसा जैसा भी होता, राइट? ओके ठीक है, इट वुड बी पॉसिबल वट एवर इट इज, बट केस में नहीं है ना वैसा। इस केस में यू हैव एक्स स्क्वायर एंड देन यू हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। हम्म होगा क्या पॉसिबल? नहीं राइट, करें फिर आगे बढ़े? ठीक है। हाँ भैया, तो मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, वो मतलब ये लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो उससे डिफाइन नहीं करेगा, ये जो हम लोग के एक्स और मतलब एक्स ओ स्क्वायर माइनस फाइव एक्स भाई, है उस पे ग्रेटर देन और डिपेंड इक्वल करेगा। टू, अरे नहीं, नहीं, दैट इक्वालिटी ग्रेटर साइन देन से वो डिपेंड करेगा। वो तो भाई उसी से डिपेंड कर रहा है मेरे भाई, ये तो देखना वही तो चीज है। देख तो सही, यहाँ देखना क्या है, ध्यान से पढ़, क्या है ये? लेस देन जीरो। लेस देन। और इसी क्वेश्चन को हम्म अगर मैं चेंज कर दूं भाई, तो जीरो तो इंक्लूड करेगा फिर, क्योंकि तेरे को जीरो हाँ चाहिए। इक्वल भी तो ये क्वेश्चन कहाँ जीरो होगी? जीरो पे जीरो होगी और एक 5 पे जीरो होगी, तो दिस टू यू विल इंक्लूड ना मेरे भाई। हम्म तो इन दैट केस दिस विल ठीक। चेंज, दिस विल बी, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा 0 to 5। इट मीन्स दैट 0 and 5 बोथ आर इंक्लूडेड। हम्म ठीक। डाउट है क्या कुछ इसमें? नहीं नहीं नहीं, वो बस ब्रैकेट में कंफ्यूजन हुआ था। राइट, राइट, चलो एक थोड़ा टफ करते हैं आप लोग के लिए। टफ क्या मतलब, बस उसमें जीरोस क्रैक करना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी तो आप लोग कर लोगे। 2x² -4x + 2, और डिनोमिनेटर में वी हैव x² -3x -10 इज लेस देन जीरो। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन यू अप, राइट, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन रेंज ऑब्वियसली इन फंक्शन क्लास 2, राइट, बट अभी यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है? whenever they are asking, right, two questions, what is value of x, right, and what is range of x, मतलब what is value of x, what x can be answer you will get, what is range of x, the meaning of both are same. if they are asking you the range also, range मतलब x में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में it will lie, from where to where the value of x will lie, right, that is also range. So in the same manner you have to calculate the same thing what you used to do, right? वही आपको solve करना, they are asking you to do the same thing, language is little bit different, that's all. The way of asking they change it out, but otherwise the question is same. Clear? Right, चलो start करो। आप, मैं ऊपर वाला तोड़ देता हूँ, आप लोग नीचे वाला तोड़ दो, ठीक है? मैं ऊपर वाला तोड़ दे रहा हूँ, 2x² माइनस, उसको तो ऐसे ही टूट रहा है, इट इज x-1 और 2x-2, राइट? और तो ऐसे भी दिख रहा है x² -2x, हाँ वही है, x2 कॉमन निकालो, x-1 का होल स्क्वायर है तो, राइट? हेलो, है ना? 2 रहेगा बाहर, हेलो, हाँ हाँ भैया। जी सर, ये यस यस। राइट? और डिनोमिनेटर में क्या है? तोड़ दिया डिनोमिनेटर, 5 x माइनस and 5 इंटू 5 एक्स प्लस 2। 2 है क्या? x x plus माइनस 2 x 5, minus 2 हाँ x and + x 2, x plus plus राइट? 2. दैट इज व्हाट, लेस देन जीरो। अब आएगा असली मजा, क्या बोल रहा है? लेस देन जीरो, राइट? नाउ बताओ जीरोस, बताओ पहले मुझे, व्हाट आर द जीरोस? minus 2 1 and 5 5 अरे ओ, स्टार्ट विद लोवेस्ट नंबर ना, फर्स्ट क्या डालोगे नंबर लाइन पे? -2, -2 yes sir minus देन 2 1, 1/2। 1 and 1/2, 5 1, 5, राइट? 1 साइन and साइन किससे स्टार्ट करोगे? पॉजिटिव? 5 क्या क्या नेगेटिव होगा क्या मेरे भाई, है ना? यहाँ तो positive होगा। व्हाट अबाउट दिस? positive कैसे पॉजिटिव भाई? 1 के अराउंड साइन चेंज होगा क्या? डबल टाइम है ना, नेगेटिव से हाँ पॉजिटिव हाँ तो फिर भैया। दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा ना। correct अरे अभी तो समझाया था मेरे भाई, स्क्वायर है ना, सेम नंबर इज देयर, राइट? तो इफ इवन इफ साइन गॉट चेंजेस द नंबर इज ट्वाइस, साइन विल बी सेम ना। हेलो, जी got it जी राइट? तो ये माइनस माइनस, ये क्या होगा?
Positive. पॉजिटिव, राइट? नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x लेस देन 0 बोल रहा है, Less than -2 0, to -2. 5. है, नेगेटिव बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी कहाँ आ गया आप लोग? -2 to -2 to 5. 5. 5, बट नॉट इंक्लूडिंग Excluding 1. 1, राइट? इसको दूसरा तरीके से आप क्या लिख सकते हो? ऐसे R -2 to minus. 1 यूनियन 1 to 5, अगेन यू आर नॉट जस्ट इंक्लूडिंग 1, राइट? या फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1। अगर ये दोनों ऑप्शन में, दोनों विल बी राइट आंसर। क्लियर? मुझे थोड़ा ये 1 वाले पार्ट में डाउट है अभी। ये क्या अभी डाउट जो है? हमने रेंज लिया, कौन सा रेंज? नीचे जो लिखा मैंने, ये 1 जो किया है वो नहीं क्लिक हुआ मुझे। क्या नहीं क्लिक हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ। 1 जो हमने अभी एक्सक्लूड किया है ना, हाँ 1 तो वाली अबे वैल्यू। भाई, तो ये लेस देन 0 है ना, तो 1 पे तो 0 हो जा रहा है, तो एक्सक्लूड नहीं करूंगा क्या? लेस देन 0 बोला है ना, इक्वल टू कहाँ बोला है उसने? लेस ओके, देन 0 बोला है ना उसने, तो 1 पे तो इट विल बिकम 0 ना। हाँ तो मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना मैडम, सारे जीरोस हाँ मेरे को जी। एक्सक्लूड करने मतलब पड़ेंगे। ये चीज, ये जो लेस देन 0 वाला कंसेप्ट है वो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। नॉट नहीं, इट्स दोनों ऑल में, अबाउट अरे मैडम मैडम, नो नो नो, इवन इट्स ग्रेटर देन 0 ना, तब भी आप दोनों लेके चलोगे, दोनों का केस लेके चलोगे। हाँ, इक्वल टू नहीं है तो यू हैव टू कंसिडर कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बोल ही रहा है ना ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो 0 की तो बात ही नहीं कर रहा ना, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि दैट नंबर शुड बी 0, तो वो 0 वाला तो आपको ऐसे भी हटाना पड़ेगा, राइट? ओके, नया लिंक समझ गए। भेजता हूँ, ठीक है? विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट, आई एम सेंडिंग यू न्यू गाइस अ न्यू लिंक, विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट।